जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन, who's gonna take us through पाकिस्तान। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में हमको पता करना है। और 3 दिन का पेट्रोल बचा है, 4-5 दिन का खाना बचा है, 1 महीने के लिए से कम का पैसा बचा है। क्या होगा पाकिस्तान में? सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड जय हिंद। आपकी दो articles you've written are piercing. If it lands up on Shahbaz Sharif's desk, I'm sure he'll slip off his chair. भाई, first of all, thank you. And this is a very critical juncture at which we are having this discussion. और मैं समझता हूं कि हाँ, अगर शहबाज शरीफ साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो शायद उनमें कुछ विजडम आ जाए, पाकिस्तान की पब्लिक में भी कुछ विजडम आ जाए। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि 24 दफे पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है अपने लोन के लिए या कुछ रिलीफ के लिए, मगर 24 दफे कोई हल नहीं निकाल पाया है जिससे कि वो सही तरीके से रीपे कर पाए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाए और जिस कोई ऐसी चीज कर पाए जिससे कि पाकिस्तान कह सकता है कि कोई अचीवमेंट हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आज तो अचीवमेंट सिर्फ ये लगता है कि हम आज जी चुके हैं और कल के लिए कल सुबह शायद जीवित रहेंगे। दैट इज सपोज टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट इन लाइफ टुडे, आई थिंक, इन पाकिस्तान। तो with that, let's go ahead and discuss what we feel is happening in Pakistan today. सर, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज है, आपने आपने पहले आर्टिकल के अंदर आपने यू रिटन 2 आर्टिकल्स एक्चुअली वेरी वेरी इंसाइटफुल। एक तो सेकंड वाला आई थिंक आपने अभी रिलीज करा, दैट्स मेरे दिमाग में वो कंप्लीट स्टोरी हुई, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। सर, कुछ करते हैं इसके बारे में एंड वी वेंट फॉरवर्ड विद दिस। बट जो आपने एक चीज निकाली है पहले आर्टिकल में से, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि आपने क्या बोला है कि पाकिस्तान में कोई बेस नहीं था सर। जो उसकी फाउंडेशन थी, a lot of people talk about it, फाउंडेशन गलत बनी है एंड दिस एंड दैट, बट पाकिस्तान इज नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बेस कि भाई इंस्टीट्यूशन खड़ी करें, अपनी एजुकेशन लगाएं, ये करें वो करें। दे हैव नॉट डन ऑल दैट स्टफ। ये लोग देखते रहे किस कैंप में जाके बैठना है ताकि हम कुछ जाके अपने लिए वी शुड बी टॉप ऑफ द लाइन इन द वर्ल्ड। जो इमेज है पाकिस्तान की वो उनको ठीक रखनी थी, बट इनसाइड इट वाज ऑल एम्प्टी। See, Adi, you are of a much younger generation, if I may tell you that. I have seen Pakistan in the 60s and 70s. And may I say, we used to look across the border and feel a little jealous of Pakistan at one time. Mm-hmm. And in India, we used to feel, see the quality of life these people lead. When their visitors came from there, they brought cameo soaps and chocolates and chewing gums, consumer goods which we in India could not think of. At that time, socialist India. Pakistan started with a bang with all this, but then it came down to a whimper because it could not sustain it, right? There is no doubt, the way I explain it is, India was fortunate. We received a sizable number of bureaucrats, very high quality bureaucrats. Our political leadership was more perhaps mature. Pakistan was in the throes of foundation. So it took them some time to get onto their feet. And by that time that happened, 1958, the coup d'etat took place, and then it really never looked back. When you have an army in control, and an army which does not seem to have the good of the people in mind, it seems to be only self gratification and nothing more. फिर तो मुश्किल हो जाता है जरा किसी देश का सर्वाइवल। फिर वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो होती है वही सर्वाइव करती है, और जनता जो है, पीपल, दे डोंट रिमेन एम्पावर्ड। इंडिया, भारत में अगर आपने देखा है, मैंने लिखा भी ये है कि 1991 में जो शायद हुआ भारत में अ सी चेंज, एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ हुआ। कोई एक दूसरे के पीछे पॉलिटिकल बैकस्टैबिंग नहीं कर रहा था, और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी सामने आई इस रियलाइजेशन के साथ कि हमारी स्थिति भी $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास रह गए थे मई जून 1991 में। और वहां से हम बढ़े क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई और
पॉलिटिकली सपोर्ट किया गया, ऑपोजिशन ऑल्सो सपोर्टेड कंप्लीटली। ये कंसेंसस जो है पाकिस्तान में नहीं बन पाया है बहुत सालों से। और उनकी पॉलिटिक्स, भारत की भी पॉलिटिक्स वो होती है, नो पॉलिटिक्स आर सपोज टू बी स्ट्रांग, स्ट्रांग ओपिनियंस, इमोशंस अगेंस्ट ईच अदर एटसेट्रा। मगर जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है, ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंशियल तरीके से एक दूसरे के साथ वो अपोज्ड है। कोई कंसेंसस नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल वेलबींग के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कंसेंसस नहीं होता। तो इसकी वजह से समाउ पाकिस्तान की बढ़ोतरी जो है, दैट हैज ऑलवेज बीन सस्पेक्ट। यही तो चीज आपने ठीक बोली सर, जब स्पेशली व्हेन द सोवियत वॉर स्टार्टेड, जिस तरह से जो बोलते हैं ना डॉलरों की बरसात हुई उस टाइम पे, एंड दैट इज अ फेमस डायलॉग जो बहुत सारे पाकिस्तानी भी बात करते हैं इसके बारे में। द फैक्टर दैट आई वांट टू आस्क यू सर, दैट ये जो डॉलरों की बरसात की जो आदत पड़ी इनको, दे गॉट हैबिचुअल टू इट। देयर वाज, एंड the funny thing is, one thing that comes to notice, that there was no leader who stood up and said, guys, ये क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, you're not doing anything, ये तो आएंगे जाएंगे। See, They wanted to one, just continue this. one Pakistani official did mention this. I think I mentioned this in my article also. That for far too long, I think it was Moeed Yusuf himself who said it. For far too long, ये एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एक सिक्योरिटी एंटिटी समझकर डॉलर्स की बरसात अपने ऊपर करते रहे। दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि उनकी जगह जो है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, बड़ी क्रूशल लोकेशन है पाकिस्तान की। कोई अगर कहे कि पाकिस्तान इज इररिलेवेंट एज अ नेशन, मैं उनके साथ आई कैन डिबेट विद देम एनी टाइम। जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, नॉर्थ इंडियन ओशन के ऊपर, ऐसी जगह पर एक्सेस टू हार्ट ऑफ एशिया, एक्सेस टू चाइना, अफगानिस्तान, आई मीन हर तरफ जहाँ देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। 5 सिविलाइजेशन वहां पर मिलते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान अपने आप की जो सिग्निफिकेंस है उसको अपना तो सका स्ट्रेटेजिकली, मगर उसका अट्रैक्शन वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे रहा, मतलब वो स्ट्रेटेजिक ही रहा, मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी रिलेटेड स्ट्रेटेजिक, और उससे पैसा आता रहा। The moment is significant, the moment conflict starts reducing in an area, Pakistan's significance goes down. अब जैसे 31 अगस्त 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ किया, एकदम से पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया। 8 महीने के बाद फिर वापस आ गए। पाकिस्तान के 400 मिलियन डॉलर से का एक प्रोग्राम रिफर्बिशमेंट ऑफ F-16 का शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि भाई पाकिस्तान के बिना हम नहीं रह सकते। यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर भी इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशियन में रीजन के अंदर भी इन्फ्लुएंस चाहिए। तो पाकिस्तान हैज बीन फॉर्चुनेट कि हर दफे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज हुई जिससे कि द मनी केम बैक टू देम। इस दफे खोखलापन लग रहा है, क्योंकि जब तक आपने अपनी कैपेबिलिटी नहीं बनाई है। सी, भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखिए, जब से मोदी सरकार ही आ गई, आई मीन द काइंड ऑफ एनहांसमेंट दैट वन हैज गॉन थ्रू इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, और फिर 2035 को देख रहे हैं कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। आज तक कभी पाकिस्तान ने कभी बात भी की है इसकी? किसी इकोनॉमिस्ट ने बात की है पाकिस्तान? एक अच्छा इकोनॉमिस्ट मिला, मियां आतिफ, तो उनको बनाया इकोनॉमिक एडवाइजर टू इमरान खान, और थोड़े 4 हफ्ते में उनको निकाल दिया। क्योंकि वह अहमदिया है। अगर आप इन बातों के ऊपर रहेंगे तो फिर आपका मुल्क जो है कौन सी प्रोग्रेस करेगा? तो these are things which are strange about पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, मतलब हाराकिरी is a very soft word when it comes to Pakistan. Sorry, but harakiri is a, I mean, interesting phrase, interesting word for Pakistan's self-inflicted wounds. Uh, it's hard to counter that, sir. Let me just say that. Sir, but आपने एक चीज बोली, militarism and security state establishment. Although establishment is, again, पाकिस्तानी कोई सुन रहा होगा तो बोलेगा यार ये establishment क्या बोल रहा है? Establishment
is what I'm talking about, the setup of the military is, the military is forefront sir. सबसे आगे अभी भी वही है. I mean, अभी भी वासिम मुनीर साहब गए सऊदी अरेबिया से, जो थोड़ा बहुत प्लेज आया वो उसकी वजह से आया, अदरवाइज नहीं आना था. इवन बाजवा साहब पहले जाते थे यूएसए में, ही यूज्ड टू कॉल वेंडी शर्मन एंड दिस एंड दैट एंड गेट द मनी, आईएमएफ से कुछ करा दो यार, ये करा दो वो करा दो. सो मिलिट्री हैज ऑलवेज बीन इन द फोरफ्रंट. एंड आज जो मिलिट्री बोलती है कि हम बैक फ्रंट में होने वाले हैं, हम पीछे हट रहे हैं, एटलीस्ट बोलते हैं, तो इनका पूरा स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाता है सर. हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ कंट्री विच हैज बीन सेट ऑन द मिलिट्री, आई मीन मिलिट्री की पीठ पे चले चले हैं ये लोग पूरी टाइम पे, अभी अगर मिलिट्री भी हट जाए तो फिर क्या बचेगा इनका? See, that is one of the most worrying things at the moment. कि इनके पास कुछ रहेगा ही नहीं. हर चीज के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट और किया है. सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है. तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, इमरान खान की पार्टी, उन्होंने रूल किया है. पीपीपी ने रूल किया है. नवाज शरीफ, मतलब शहबाज शरीफ साहब की पार्टी पीएमएल जो है, उसने भी रूल किया है. तो अब रह क्या गया है? एमक्यूएम को ले आइए, शायद उन्हीं से रूल करा लीजिए. अगर और कुछ नहीं तो फिर पाकिस्तान आर्मी है. अगर आप पाकिस्तान आर्मी जो है बैक स्टेप ले रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी बैक स्टेप ले लिया, बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस द ब्लेम कि तुम्हारे निगरानी में अंडर यू द मेल्टडाउन हैज टेकन प्लेस. एंड आई एम श्योर द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, द मोमेंट दे सेंस द मेल्टडाउन इज नियर, they will resign. They will not want to stick on, because no one wants to ultimately be left holding the baby. So that is the most difficult situation. एक political consensus नहीं बन पाएगा. क्या political consensus with the military के साथ कोई leadership सामने आ सकती है कि नहीं? That is the very, very worrisome thing about Pakistan, because and the moment you come to a situation like that, then the implosion starts. जब लीडरशिप ही नहीं मिल रही है आपको, तो फिर इम्प्लोजन तो होगा. So that individual relationships in different parts of the country can come to the fore. I mean, this is what I am trying to say, sir. आपने हाइब्रिड regime ट्राई कर ली, आपने क्या ये कर लिया, इमरान खान को लगा दिया, इसको कर दिया, तो बचा कौन है? There is no one else left. Exactly. अब ये बात कर रहे हैं कुछ, या ये लोग कुछ बात कर रहे हैं कि हम उनको ले आएंगे, कुछ technocrats को ले आएंगे. They've done that before, it didn't work. So I mean, technocrats. No, you can't have technocrats coming in and ruling the country. Ruling the country. They Absolutely. can come and yes, be available in terms of looking after the high levels of the bureaucracy, which they are already doing, being more empowered than what they normally are. Emergency powers को exercise कर सकते हैं, etc. But they cannot assume political powers. I've never heard of a thing where a bureaucracy comes and rises to a political leadership. No, the military can do that. But if the military is reluctant to do it, then it's a sorry state. And that is the state which I say is the state in which that nation is just ready for implosion. Implosion, sir. Correct, sir. Sir, implosion, let's just keep it for the next question, because I have an interesting connection to make where I want you to kind of tell us. Pakistan के पास सर 2-3 trump cards थे. One was the Islamic Brotherhood, or the Islamic neighborhood, or the Islamic countries which were there, which would support Pakistan on the name of Islam. And they said, we are brothers and please help us. And they would do it. They would genuinely do it. As a matter of fact, कितना पैसा सऊदी अरेबिया ने दिया इनको विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, यूएई ने दिया, सबने दिया. सो देयर वाज दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. द दूसरा एस्पेक्ट वाज जो सेल्फ सुसाइड नोट, द न्यूक्लियर वेपन अपना दिमाग पे लगा के भाई वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नो दैट. एंड द थर्ड बिग ट्रम्प कार्ड जो आज बचा नहीं है सर, बट थोड़ा बहुत उसमें भी देयर इज, दे कीप लाइटिंग इट इनटू फायर, इज अफगानिस्तान. ये देखो जी, टेररिस्ट आ गए जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी. These are the 3 trump cards that Pakistanis have, sir. May I request you, आप इन 3 trump cards का आज जरा थोड़ा सा, can you please help us understand what is the status of these 3 trump cards, whether they are still usable, sir? जहां तक इस्लामिक कंट्रीज का सवाल है, मैं कंपेयर करता हूं 2019 को 2023 को. ये जो 3.5 साल तकरीबन जो बीते हैं पैंडेमिक ने बहुत फर्क इसके अंदर किया है. इकोनॉमिकली एवरीवन इज होल्डिंग बैक.
the Islamic world, which would perhaps have come forward to help Muslim brethren and this and that, suddenly is extremely wary about this. और साथ में यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस यूरोप में शुरू हो गई, कुछ मालूम नहीं कि आज क्या होगा मिडिल ईस्ट के अंदर. One of the few countries in the world which is doing well comparatively is India. सुना है सऊदी अरेबिया का जो है is one of the few countries. I think next month Saudi Arabia will probably become the fastest growing economy in the world. It'll just surpass India by a little bit. Right? But it has led to an element of caution. And no one is jumping into all this. Geopolitically, the last 3 years have actually led to this kind of a conclusion where if people were jumping into situations, they are holding back today because no one is certain of the future. In fact, the immediate future. So the Islamic world, dependence on the Islamic world, my research shows me कि $22 billion promise किया है यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर ने मिलाकर, और उसका कोई आज तक एक रत्ती भर पैसा जो है वो नहीं आया है. ये 23 जनवरी तक की भी डेट, लास्ट डेट थी जो जिसमें मैंने देखा है कि promises have been made but nothing seems to be coming and everything is working on a day to day basis now, क्योंकि आज ships जो है वो खड़े हुए हैं कराची हार्बर के बाहर, जिसके अंदर खाना पीना और एनर्जी लदी हुई है, लोग कोई इसको अनलोड नहीं कर पाएगा. इंटरनेशनल शिपिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंश्योरेंस नहीं कर रही हैं एनी लॉन्गर फॉर एनी शिपिंग विच इज मूविंग टू कराची हार्बर. तो स्थिति काफी काफी गंभीर उस किस्म से है. दूसरा है अफगानिस्तान. देखिए अफगानिस्तान का पोटेंशियल टू बिकम अ न्यूसेंस हैज रिसीडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ये जो बाइडेन की बहुत बड़ी चाल थी जो 31 अगस्त 2021 को उन्होंने खेली कि चाहे कुछ हो जाए हम तो निकलेंगे यहां से. And you found the kind of manner in which they came out, leaving behind hundreds and thousands of weapons and new aircraft and helicopter, but they got out. Little later, they realized that they could not have a hands-off policy. कुछ ना तो उनको कुछ ना कुछ तो रखना था. उन्होंने ये समझा कि और कुछ नहीं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहो ताकि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पे हमारे इंटरेस्ट, यूएस इंटरेस्ट को वहां पर कायम रखे. That's why they came back with this $400 billion refurbishment deal and suddenly putting Pakistan, propping up Pakistan, suddenly speaking on Kashmir and थोड़ा भारत को थोड़ा short shift के तौर पे दिखाना and things like that. All that started at that particular time. आज ये यकीनन हो रहा है कि तालिबान की काबिलियत जो है वो नहीं है जो what was there earlier, and the world in general has taken a step back from the cycle of terror. There will be a cycle of terror which will come back. There will be a revisiting of the cycle of terror. Abhi nahi. It may take some more time. And that is one of the reasons why Afghanistan has suddenly stopped becoming an attraction. The word Afghanistan is used, stabilize Afghanistan, play up Afghanistan, नहीं तो शायद पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं कहाँ से किस तरह का तहलका मच जाएगा. That essence has stopped. So these are the two things which I'm forgetting the third issue which you had raised. I had brought in Afghanistan and I brought in the whole issue of Islamic support. What is the third issue? The nuclear suicide, sir. That's a very interesting one. All right. They are very proud of this, that they have nuclear weapons with them, that they have established a supposedly very professional command and control system, which they get certified from the Americans from time to time. But beyond that, to imagine that you can threaten the world with implosion, कि अगर हम implode हो गए तो हथियार पता नहीं कहाँ जाएंगे, जो विशुअल थिंकिंग है दुनिया की कि शायद ये कहीं टेररिस्ट के हाथों में ना आ जाएं, कहीं ये सब किलो टन न्यूक्लियर हथियार जो हैं ऐसी जगहों पर ना पहुंच जाएं जैसे कि कोई सबवेज हैं न्यूयॉर्क में या टोक्यो में या दुबई में, ऐसी जगहों पर ना पहुंच जाएं. तो ये अंदेशा जो इनके पास था
That could be played up to a point. Today, to say this, I don't think the nuclear card is going to play itself up strategically to such an extent. हालांकि with Ukraine, the mention of the N word is much more frequent today than it was some years ago. But perhaps that has also itself lost its importance. And because of that, Pakistan may not be in a position to blackmail the whole world on this on this issue of nuclear weapons. Besides that, अगर इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो बोलना तो आसान है इसको कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर हम इम्प्लोड हो गए तो देखना भैया पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा. But for the world to believe such a thing like that is happening, I think, and make this into a very credible kind of a threat to the world is a difficult proposition. Indeed, sir. And that's, I mean, why I asked this question, मैंने क्यों पूछा, because शहबाज शरीफ साहब का एक छोटा सा statement था which actually propped this up, and it was a, if I was a Pakistani, I would have died in shame just listening to that. He said, nuclear असासे वाले देश को भीख मांगने में शर्म आती है. And one really wondered, what has nuclear weapons to do with anything? Your economy, आपने जो कुछ करा है, that is because of what you did. इसमें nuclear weapons कहाँ से आ जाते हैं? For this, you got to go back into the history of Pakistan's nuclear program. You see, Pakistan's nuclear program was a program of chori chupe karna, as it was called, right? It was a very subtle kind of a putting together of resources here and there. If you follow in the 70s, how they did it in Belgium and in Holland and places like that, stole parts from here and there, etc. And their scientists came together somehow to weld this together into a bomb. And that came then to be called the Islamic bomb. उसको प्रोजेक्ट किया गया था as an Islamic bomb. This was to tell the Islamic world, the 57 countries of the OIC, see, we are the number one Muslim country of the world. हमारे पास हथियार है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, आपके पास शायद पैसा होगा, आपके पास तेल है, मगर हमारे पास हथियार है. So we can put all this together into a comprehensive power as far as the Islamic world is concerned. बहुत लोगों ने बिलीव भी किया, स्ट्रेटेजिकली ये बिलीव किया कि yes, Pakistan's importance has gone up because of this particular reason that it is. No one denies this fact that you may have a set of strategic weapons in your arsenal, but if if 60% of your population is below poverty line and the numbers are increasing every other day, the implosion within is going to be much more dangerous than anything else. So it's because of this that somehow Pakistan got this, this perception in its mind that its power came from its nuclear weapons, right? There's no doubt it changed the tone and tenor of the battlefield as far as the subcontinent was concerned, etc. But its nuisance value, what they don't realize is that it's not its strategic value, but its nuisance value increased for the world. And the moment your nuisance value increases, no one looks at you with that sense of esteem. They just consider you to be a pariah, right? And that's what Pakistan has been all these years, a pariah, nothing else. If, along with nuclear weapons, they had endeavored to enhance their economic capability, manufacturing, right, carried out a social transformation within, probably carried out a complete addressal of their education system, right, looked at technologies, all that happened in China, all that happening in India today, perhaps Pakistan would have been at the top of the world. A smaller country, 200 million, 220 million people, with a good economy, with a good education base, etc. And then on top of that, nuclear weapons. Then the comprehensive national power of Pakistan would have been something to envy. Not today, when you may have nuclear weapons in your arsenal somewhere, but you don't have enough resources to feed your own population. And no one is going to buy this kind of
you know, uh, attempt which Pakistan is making to try and tell the world that it is sinking, and that this sinking will take the rest of the world with it, as you very correctly said, putting the a weapon to your head. So no one is buying it today, and that's one of the reasons you're seeing this delay in everything. Otherwise, people used to Yes. rush. Yeah. The moment there is an impending food crisis, an impending humanitarian crisis taking place in a part of the world, you'd find the World Food Program, this, that, everyone jumping into it. No one is doing it at the moment. People are treating it rather casually, if you ask me. Things will come to a head. Things will come to a head. I'm quite certain if it's not addressed in time, because as we said very correctly right at the beginning of our program, there is a couple of days of reserves left in everything, and this is the situation we had in 1991. 91. $1 billion India had in the month of May, June of 1991. And where have we bounced back to? $550 billion in our foreign exchange reserves today, with a 6.7% economic growth, GDP growth, right? All this is possible because there was a sense of purpose, sense of unity in terms of national aims, national interests. This seems to be passing by in as far as Pakistan is concerned. They never seem to understand what is their national interest. Is their national interest Kashmir? Kashmir is not going to feed them. It'll give them a couple of apples, perhaps. It's not going to feed them otherwise, right? Their national interest is internal resilience, internal capability. Forget Kashmir. Forget all these things for the moment. You want to address all that, you may come back to it later. But for the moment, they have to primarily address their internal weaknesses which are there. And among them, economy is not the only internal weakness. It is this gnawing cancer of radicalism. The whole issue is a matter of time before the TTP gets into the innards of Pakistan. They're already there on the periphery. If it gets into the innards of Pakistan, and you'll see the slow burning fires will erupt into something which is uncontrollable. Interestingly, sir, every time I think of a question, you've actually landed right into it, because what my question to you was the people. जो लोग हैं सर पाकिस्तान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है. आई मीन, अब अगेन कोई एंड इंडिया में लॉट ऑफ पीपल माइट माइंड व्हाट आई एम सेइंग, बट बड़े भोले से लोग हैं. इनको जो गोली पिला दो पी जाते हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर द शो स्टार्टेड, सर. ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? Yeah, I agree with you. It's the people's domain. It's not as if देखिए, हम कहते हैं कि भारत का स्ट्रेटेजिक कल्चर बड़ा कमजोर है. मैं कहता हूं हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर तो बहुत मजबूत है कंपेयर टू पाकिस्तान. सेम मिट्टी से बने हैं पाकिस्तान सर. का स्ट्रेटेजिक कल्चर ही नहीं है कुछ. I mean, you see, what I say mean about strategic culture in this sense here is your ability to understand your self interest. कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है भाई, एज अ नेशन. ठीक है, some so that you don't do things which can be counted as virtual harakiri, as I say, right? पाकिस्तान के अंदर उनको मालूम है कि देखिए, अगर कोई तरीका है टू डू गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो ओपन अप ट्रेड, MFN स्टेटस दे दो भारत को, अपना रास्ता खोल दो अफगानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए. सार्क जो है ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट कमिंग इनटू बीइंग, कॉमन मार्केट बन जाएंगे. ठीक है, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट थिंग्स विल स्टार्ट फ्लारिंग आउट. मगर नहीं, उसी पर अड़े. 1992 में जब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स केम अप, I was in a celebratory mode at that time, saying, "Oh, wonderful! India will now have access to these Central Asian republics." Little did I know about Pakistan sitting in the middle here. Will never even think of its own self-interest. वो पाइपलाइन देख लीजिए आप, तुर्कमेनिस्तान, तापी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, टापी पाइपलाइन. अगर वो पाइपलाइन आ जाए, पाकिस्तान को कितना फायदा है? भारत को तो फायदा है ही. 25% of our gas reserves gas requirements will almost be met. पर पाकिस्तान को ट्रांजिट, कितना उनको ट्रांजिट का पैसा मिलेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं कभी. तो
I would consider Kashmir to be a tactical thing. ये तो छोटी सी चीज है, इनको मतलब सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में. They should be first thinking of how to empower themselves. वो उनके अंदर somehow ये सोच विचार नहीं आता है. आता भी है कभी तो गवर्नमेंट कोई आती है कुछ कर भी रही है, अगर जैसे नवाज शरीफ थे, उनकी शायद सरकार जो थी एक सरकार थी which was stable and which attempted to look at economic advancement etc, because he was a good businessman himself, he knew economics and things like that. मगर फौज उनको नहीं जीते देती थी, ऑपोजिशन भी ऐसा था उस वक्त. फिर आपने देखा कि 2011 में से क्या, 2007 से तो आपने देखा कि लाल मस्जिद के साथ 2011 में जब ये सलमान तसीर का असैसिनेशन हुआ, मुमताज कादिर को क्या उन्होंने स्टेटस दिया, और उसको कभी क्वेश्चन भी नहीं किया. सरकार ने कभी क्वेश्चन नहीं किया उसको, हालांकि दे हंग हिम टू डेथ ऑल राइट, बट दे नेवर क्वेश्चनड हिम. सो दिस इशू ऑफ रेडिकलिज्म, आइडियोलॉजिकल चीजें हैं, ये दे हैव बीन अलाउड टू फेस्टर. And today they have come to a stage where the Pakistan army can either attempt to do what it wants to do in Kashmir, or fight internally, or look after its new areas of interest now, which are emerging, and that is the Durand line. Because that's the new areas of threat. The Afghans are waking up to it, and the Afghans, you know, when they wake up to their requirement, they don't hold back. देखें करें भी तो क्या करें, that's the conundrum. Sir, last two small questions. One is, sir, Sri Lanka में जब things went astray, sir, जो telltale signs थे सर, बैंक्स में पैसे खत्म होना शुरू हो गए, आपके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए, your food went off, आपके ऑयल खत्म हो गया, those telltale signs अभी आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान में. And Pakistanis, sorry, yeah, go ahead. Pakistanis used to say, यार हमारा श्रीलंका ना बन जाए. The other day, funnily speaking, I was listening to some Sri Lankans. They were saying, "यार हमारा पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए." Exactly. So both the countries are very interesting models to study. हाँ जी. And I was listening to Ajinkya Saab yesterday in your other program. He did mention this aspect of the Sri Lankan model and how they threw out the government, they threw out the prime minister, threw out everyone, and they've done a wonderful thing by actually ordering the reduction of the size of their army from 200,000 to something way down. The figures will come in the next 2 to 3 years. A country which is suffering from the kind of economic problems that Sri Lanka is suffering, you can't afford to have an army of 200,000 or more. Similarly with Pakistan, a country down to $1 billion, $1.5 billion of foreign exchange reserves, can't afford to have an army of 650,000 sitting there. I mean, they'll have to drastically look at it, and that is what, I'm not sure whether the IMF has asked for any reduction in terms of its paramilitary forces or its regular forces, etc. But the kind of resistance जो Imran Khan or Shehbaz Sharif ने दिखाया है against all these directives which the IMF has given does indicate that behind the scenes something or the other has also been told to them to tweak the size of the security setup, because this is is far in excess of what is actually the need of the hour. But to come back to your question specifically, Pakistan के अंदर एक interesting चीज है which not too many people have commented upon. There is a parallel black economy, and this economy is also based very largely on narcotics, drugs, and you're aware with all the weaponry which is there in Afghanistan, it's also on arms and weapons. So a black economy can sustain a nation for some period of time. Remember, Afghanistan, what capability does Afghanistan have today, except for its internal crops that it is growing or things like that? Of course, putting out much more drugs into the agriculture sector at the moment and hoping to reap the benefit from that. But a country like Afghanistan, earlier it was assessed, requires about $8 billion a year to keep it afloat. Mm-hmm. Today, perhaps
much more is being spent on it, but it is generating that kind of money. It is generating that kind of money. Maybe Pakistan will be able to generate some of this on its own internally in terms of agriculture products and etc. Imported items, of course, the economy cannot function without degree of imports. Imported items, it does not have the wherewithal to pay for it. So that you will find a lot of luxury goods and things like that will all disappear from the shelves. Pakistan does not have too much of manufacturing capability itself. Is not invested enough into it, so that way it will suffer. But having said this, when you put all this together, I still consider that Pakistan will be able to tide over all this for a period of 6 to 8 weeks quite comfortable by just tightening his belt a little bit. In this time frame, the international community will have to get its act together. And it is this 6 to 8 weeks which is very crucial for order to remain. It should not disintegrate into disorder. Because the moment disorder comes, then you will have to pump in that much more to first get order and then to start refurbishment of the. So, Pakistan is at a very crucial juncture at the moment, and the more it pays attention to its internal stability at the moment. The army is the only organization which can ensure this. But a lot depends on what the ambitions of the 9 corps commanders and the PSOs, etc., is. You can never look into the minds of the Pakistani top brass. Each of them has got his own ambitions, right? Although all of them have got everything good, all the goodies of the world. Their children are all studying abroad, etc. They've all got farmhouses around Lahore or around Peshawar and around Rawalpindi. But at the end of the day, it is power which attracts the most. जी. And in Pakistan, that is what these people aspire for. So, to summarize your question, the answer to your question, मैं समझता हूँ 6 से 8 हफ्ते without any major things happening to put together a support to Pakistan. About 6 to 8 weeks they can survive quite comfortably, but after that there will be a major problem. Last question, sir, and the big one actually. Western Front, उनका एक्चुअली वेस्टर्न फ्रंट क्या बचा है सर? वेस्टर्न तो अंदर ही आ रहे हैं बेचारे, वो आई मीन बेचारे तो नहीं, बट दीस गाइज आर लिटरली कमिंग इन. रिपोर्ट्स कहती हैं केपीके में, एंड आरिफ सिंस यू मेंशनड हिम, ही सेड दैट काफी जगहों पे वो टैक्सेस दे रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. दूसरा सर, उनका एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ईस्टर्न फ्रंट है व्हिच वी आर देयर. आई मीन वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. हमारा कोई ना प्लान है ना प्लून है, ना देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट वी वांट टू गेट इनटू. और जो ये ईस्टर्न फ्रंट में सर एक इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और एक व्हिच दे नीड टू वर्क ऑन. उनकी तरफ से, दिस इज जस्ट व्हाट आई फील, एंड आई रियली लाइक इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस एज वेल. पाकिस्तान थिंक्स दैट इंडिया शुड कम ऑफ फॉरवर्ड एंड हेल्प. इंडिया को करना चाहिए कुछ, वो करें तो ट्रेड खोल दें तो हम लोग कुछ करेंगे, एंड दिस एंड दैट. व्हाट कैन इंडिया एक्चुअली डू सर? बिकॉज एक जो कंट्री है जो अपने आप को हेल्प नहीं करना चाह रहा, जिसको दुनिया हेल्प नहीं करना चाह रही, हम कहां घुस के उसमें हेल्प करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग. सभी ये आजकल चर्चा इसके ऊपर कर रहे हैं कि भारत को कुछ करना चाहिए. मैं करता हूं कि मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी मदद भारत जो है अगर पाकिस्तान की कर सकता है, विल बी टू अडॉप्ट अ हैंड्स ऑफ पॉलिसी. कीप योरसेल्फ ऑफ. You don't want to get mired into the problems of that country. It's very difficult understanding the psyche of that country. And therefore, to put ourselves into assisting someone who we don't understand at all, I think is beyond our reach, beyond our care. Let the situation develop. Don't do anything which is adverse. ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सीज फायर को वेपराइज कर दो एकदम से, फटाफट फायरिंग, और उनकी आर्मी को यहाँ अट्रैक्ट कर लो and show some movement, some maneuver into Kashmir Valley or into the Rajouri sector, ताकि पाकिस्तान को अपने आर्मी को इधर रीडिप्लॉय करना पड़े. नहीं, मैं नहीं ये सब नहीं कह रहा हूँ कुछ. मैं कह रहा हूँ as is where is, less is fair.
एज इज वेर इज, छोड़ दो इस वक्त, लेट द सिचुएशन फेस्टर, लेट इट emerge the way it is. I don't think we are in a position to influence things there. Uh, and I don't think we are, even if we are in a position to influence, we are not in a position to control. So it's best not to get into a situation such as this. Yes, be available for advice to international community. If someone tells me that track 2 आपको खोलना चाहिए with Pakistan, I would support that. It's good. Track 2 आप खोल के रखिए, मिलिए इधर उधर अगर आप जा सकते हैं, कुछ some prominent important diplomats, military personnel, bureaucrats, etc., intelligence वाले, वो मिल सकते हैं एक दूसरे से to make sure that they can report back to their governments and maintain a sense of stability on the eastern front. Confidence building में भी जी ये काम आता है. मगर trade is not something which you overnight you start like this. नहीं. I would strongly also recommend that जहां पर सीज फायर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर जो लाइंस हैं, जो लाइंस बिछी हुई है कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन लाइंस, उनको बढ़ावा दिया जाए. अभी आपकी डीजीएमओ की हॉटलाइन है, मेरे ख्याल में कमांड की भी हॉटलाइन है, अब ये सेक्टर्स की भी हॉटलाइन अगर आप खोल दें तो अच्छा है. It will prevent any untoward incidents suddenly escalating into something big, right? And this is a time when no, Pakistan may not do it, India may not do, definitely will not do it, but something stray happening. गोली चल गई गलती से, कुछ हो गया, पाकिस्तान की कोई रोग सब यूनिट है, कोई रोग एलिमेंट्स हैं, कोई टेररिस्ट का पेनिट्रेशन है किसी आर्मी यूनिट के अंदर, उन्होंने आकर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर शुरू कर दिया, थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड कंप्लीटली. ये कंटिंजेंसीज हैं. टू केटर फॉर दैट यू नीड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ क्विकर टाइम फ्रेम. डीजीएमओ टू डीजीएमओ टॉक टेक्स फेयरली लॉन्ग बिफोर दे कैन. एक तो ये वंस इन अ वीक होता है, मैं समझता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी शायद बढ़ा दें अब तो ज़्यादा अच्छा होगा. आई एम नॉट, मुझे मालूम नहीं, यकीनन नहीं मालूम कि एनएसए लेवल पे कुछ हॉटलाइन है कि नहीं है, पर अगर नहीं है तो आई वुड से इट्स अ गुड थिंग कि एनएसए लेवल पर भी कर दीजिए, बिकॉज वी आर अवेयर ब्रॉडली दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एन NSA to NSA interaction which has taken place over a period of time, which has been only to the advantage of both countries. It's not anything disadvantageous in any way, right? So to summarize all this, I would say at the end of the day, don't do anything proactive. कुछ नहीं. और आपकी जो ये मदद की जो आपसे मांग हो रही है, इस पर कंसेंसस है कि नहीं है? कि अब एक दिन आप कुछ कहते हैं, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ कहते हैं, और उनका जो सेक्रेटेरिएट है उसके बाद वो ट्विटर पे लगाता है कि भाई हम ये मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि पहले कश्मीर रिजॉल्व करो तब हम साथ साथ ट्रेड करेंगे. I mean, these are ridiculous things. So that is one of the major reasons why we should not get ourselves involved in these kind of things. Apart from that, sir, वहाँ पर शहबाज शरीफ बोलते हैं हमने क्या we've learnt our lessons, and his foreign minister there calls our prime minister a butcher. So I don't think दो angles are even meeting together. इनका, just to add to what you said and humbly add to what you said, sir, पाकिस्तान में एक चीज है सर, डायलॉग मारने का बड़ा शौक है इनको, and that one thing I've seen has taken them down even further than what they were. They've had such bad loose mouths, जिसके मन में जो भी आता है बोल देते हैं. अभी कुछ हुआ था, one lady said हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे इंडिया के ऊपर. This is all to be taken with a pinch of salt. It is. Mavericks होते हैं, हर सोसाइटी में mavericks होते हैं जो बोलते रहते हैं आसपास. Yes, पाकिस्तान के अंदर perhaps they have their greater than the share that they should have actually had of such mavericks, or such mavericks who keep speaking these kind of things. ये एक inferiority complex से आता है. You see, पाकिस्तान का, it's a very important thing to remember, 65-71 के लड़ाई तक पाकिस्तान के अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था. मैं तो मिला हूं बहुत लोगों से पाकिस्तान की जो आते थे उन दिनों में, बड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था. एंड दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन यू. भारत क्या है, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, एम्बेसडर कार और फिएट कार देखो अपनी, एंड थिंग्स लाइक दैट.
Today they are suffering from a total inferiority complex. Absolutely. Total inferiority. You compare When we compare our pay, we compare our pensions with the government organizations of Pakistan. When we look at the kind of other resources that we have, the prices in India, the exchange rates that we have, I mean, you can really swell up and stand in front of of a Pakistani. That is what is hurting him. Is hurting him. It's not a good thing. This is not a good thing. We must try and live amicably together and ensure that the entire region grows together. It's not a good thing to have this mismatch in growth, because the more the mismatch, the greater is your security problem. This will always continue like this. Yeah. So we have to find the means somehow subsequently that if Pakistan has to survive as a nation, it too must find for its own people a better quality of life, better aspirations, ability to aspire for more as far as they are concerned. And this will all happen when the regional mechanism finds a greater life. After all, ASEAN you found in Southeast Asia, etc. Here it is Pakistan basically which is holding back this entire thing. SAARC is essentially being held back because Pakistan doesn't Pakistan. cooperate on these things. Of course, they will SEO. readily say that India does not cooperate, but by and large, the fact remains that India is the bigger, the larger nation through which greater benefits can be drawn by SAARC, right? So Pakistan should come forward and take advantage of that. That somehow, that ego is hurting them so much that they're just not willing to do it. Absolutely, sir. I think ब्यूटीफुल इंटरव्यू सर बिकॉज आज तक सब लोग बात करते हैं बड़ी टैक्टिकल इश्यूज में यार उसके फ्यूल खत्म हो गया ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया दीज थिंग्स आर नोन जो आज हमने बात करी है इज द पाकिस्तान साइकी एंड आई थिंक दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये एक साइकी है जिसको बदलना बहुत मुश्किल रहेगा इट्स नॉट समथिंग टिल द टाइम वो जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल झटका ना लगे उनको जोर से and I think the jhatkas are coming in now. What the change will come out is something that we'll have to see. It can be good, bad, or the ugly. As always, sir, it's lovely talking to you. Thank you, Adi. Thank you so much. This has been a wonderful program. Let me end by telling you that through my service at stages in life when I could influence my own command, I insisted on only one presentation, which was my requirement every year from my formations or my units. And that was the psyche and mindset of the Pakistan Army. You see, because unless you study the mind of your adversary, you will never be able to hit upon the right solutions to your problems. Absolutely, absolutely. I wanted to base this interview on the thought process, and we've kind of covered that in a large aspect, and it'll help the viewer go a little beyond, the current analysis which is actually happening in the mainstream media as well. As always, sir, thank you so much. Thank you. Thank you Looking very forward much. to the next interaction very soon. Jai Hind, sir. Yeah.